Hello friends, it's Rakesh Sindhwani working as a junior lecturer in English at Shri Baba Masnath Public School, Civil Road, Rohtak, Haryana. Besides, I run my own institute, British School of English, 624/24 DLF Colony, Rohtak. My purpose of being with you is to bring English grammar at your doorstep. English grammar for one and all. This is my sole purpose of being with you, and that's the reason I've opened my own YouTube channel that is in the name Sindhwanism English. I'll be coming to you time to time, be it a youngster, be it an elderly person, a school going kid, a college going kid, parents, teachers, whosoever wants to improve his or her English. I'm going to be there with you, one and all. And today is being the very first lecture. Of course, I'll be starting with the tenses, which is known to be the mother of every grammar part that we're going to do with it. So I'll be bringing present indefinite tense with you. I'm sure that this little help that I'm going to extend is going to do wonders for you. If you really want to improve your skills in English, whether it's a spoken part, written part, or writing skills, some of you would like to go abroad as well. So I'm going to make this English task as simple as possible. You would never have heard about that. This is my main objective. I'm sure all of you are prepared. So I'm starting on a very good note. Once more, well, thank you everybody for being there with me, and I'm sure you'll be there for a lot more time. मैं आज आप सबको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना चैनल सिंधवानिज़म इंग्लिश के नाम से शुरू किया है, और आज मैं ग्रामर क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस आपके साथ लेके आऊँगा. और मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद खुद सीखी हैं, कुछ जानी हैं, पढ़ी हैं, और मैं 25-26 साल से पिछले पढ़ा रहा हूँ. मैं स्कूल में पढ़ाया है, श्री बाबा मस्तनाथ पब्लिक स्कूल में मैं एज ए जूनियर लेक्चरर मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ. और उसके अलावा मेरा अपना इंस्टीट्यूशन है 624/24 ब्रिटिश स्कूल ऑफ इंग्लिश के नाम से, वो मैं पिछले 25 सालों से चला रहा हूँ. तो जितना कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में हासिल किया है, ग्रामर और लिटरेचर, और प्लस कुछ एक बच्चे हैं, कुछ एक पेरेंट्स हैं जो भी विदेशों में जाना चाहोगे, तो उसके लिए इंग्लिश का जो सफ़र है वो बहुत आसान, मैं सच मानता हूँ कि उसको मैं कुछ हद तक आसान करने वाला हूँ. सो इट्स एट 624/24 DLF Colony, Rohtak, Haryana, British School of English. This is the institution that I run. ये मैं अपने घर पर चलाता हूँ और वहीं पे मेरा इंस्टीट्यूशन है. और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैं आपके पास लेके आऊँगा वो आप सबको बहुत हेल्प करेगा. और हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस से. टेंसेस को ग्रामर का मदर माना जाता है, उसका मदर ऑफ इन्वेंशन, मदर ऑफ एवरीथिंग, दैट इज़ नोन एज टेंसेस. तो आज मैं आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर आपने ये सीख लिया, इट मीन्स हाफ द जॉब इज़ डन. Why I say? Because those of you are school going kids or college going kids, majority of the questions, at least 50-60% of the questions that are asked in present indefinite tense, rest of them in past tense. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपने अच्छे से सीख लिया, इसका मतलब आधी तो टेंसेस वैसे आपने सीख ली, और बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा. तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सब बहुत मदद करेगा. शुक्रिया मेरे को सुनने के लिए, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे. आई एम श्योर यू आर ऑल रेडी विद दैट. सो आर यू रेडी चिल्ड्रन? हियर वी गो. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं आपके समक्ष आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके आऊँगा. नाउ tenses, children, the tenses क्या हैं? Tenses means they tell you about the present tense, past tense or future tense, and no sentence can be framed without the help of a verb. जब तक आप किसी सेंटेंस पे वर्ब नहीं लगाओगे, कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता. Now what is a verb? Verb, I mean, it not only tells you about an activity, an action, an event, or a state, or a possession. It also tells you the time that we talk about. I teach is V1, I talk about present tense. I taught, it is past tense V2, it means something which happened in the past. I shall teach you,
that will take you to future tense. So that verb, क्रिया जिसको हम बोलते हैं verb, teach, that is extremely important, without which no sentence can exist. So this is what verb is all about. Now I'm coming to the tenses, the first of the 12 tenses that I'm going to discuss with you. Here I go. I'm sure you're all ready, children. This is what I start with. Now I've just written here, you can just check it out. English grammar for one and all. Well, it has got no restrictions wherever you are, whether you're a small kid, whether you are in grade 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 9, 10, 11, 12, well, it matters to one and all. Now, if you are listening as parents, it can certainly help you. If you are in village, certainly I'll try to be there with the villagers. उनके साथ ज़्यादा जुड़ना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि गांव के बच्चे, उनका एक्सेस होता नहीं है, गांव में कुछ ज़्यादा लोग ऐसे होते नहीं हैं जो उनके साथ डिस्कस कर सकें और पढ़ा सकें उनको, उस सिटीज़ में आ नहीं सकते. तो मैं चाहूँगा कि गांव के जो बच्चे हैं वो रोज़ इस बात को सुने, और फिर मैं टाइम टू टाइम आपकी क्वेरीज़ भी लूँगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हिकअप्स हैं और इंक्वायरीज़ हैं, उनको भी मैं टाइम टू टाइम लेता रहूँगा. तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट टू यू. और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा और अपील भी करूँगा कि उसको सब्सक्राइब करें. कोई इंक्वायरीज़ हैं आपकी और कोई कंप्लेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही या जो अच्छी भी नहीं लग रही, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम इम्प्रूव करें. सो दिस इज़ इंग्लिश ग्रामर फॉर वन एंड ऑल. द फर्स्ट वन चिल्ड्रन, 12 टेंसेज वी हैव गॉट. हाउ मेनी? 12. 12 हैं, उसमें से पहला मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, or simple present. Present definite is also known as simple present, children. Look at the spelling, INDEFINIT. Now when you pronounce, हम जिसको बोलते हैं तो indefinite लगता है, तो कुछ एक बच्चे NAT बोल देते हैं, but that's not the spelling. The actual spelling is INDEFINIT. This is present indefinite tense. Now what does it tell you? Indefinite means we are not certain about that. It does tell you something that an action takes place. ये आपको ये तो बताता है कि कोई ना कोई काम होता है. अब कब होता है, पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका हमें जानकारी नहीं मिलती है. डॉग्स बार्क इन द स्ट्रीट्स, आई मीन एवरीबडी नोज. जो कुत्ते हैं वो गलियों में भौंकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा विशेष कुछ बताने के लिए नहीं है, सभी को पता है. कब भौंकते हैं, कब तक भौंकते रहेंगे, ये हमें पता नहीं है. एक एक्शन है, उसके बारे में बता रहे हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फिश स्विम्स इन वाटर. दिस ऑल V1 कमिंग टू यू. इसमें क्या है कि सिर्फ आपको ये पता लगता है कि कोई एक्शन हो रहा है. कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी देर तक चलता है, इसके बारे में हमें पता नहीं लगता. दैट्स द रीज़न इट इज़ नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट, नॉट श्योर, नॉट सर्टन. ओके, हाउ डू वी स्टार्ट विद दैट? स्टार्ट विद चिल्ड्रन सब्जेक्ट, दैट इज V1 प्लस S or oblique ES plus object. Now this is the formation of present indefinite tense. S, that means subject, that means doer. अब हिंदी में हम बोलते हैं, जैसा जो बच्चे गांव में रहते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि वो बोलते हैं कर्ता, में जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं डूअर. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. अब ये V1 है, इसके साथ S oblique ES लगाना है या नहीं लगाना, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ. दिस इज V1 चिल्ड्रन. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. हाउ मेनी? 3. V1, V2, V3. 3 फॉर्म्स होती हैं. गो एंड गो बोलते हो आप. ओके, हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकेंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है. दिस इज बी इज एम आर, वाज वर, बीन. सो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर देयर. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट. तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम V1 का इस्तेमाल करेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, चिल्ड्रन, S और ES. ही गोज टू स्कूल, आपने गो के साथ ES लगा दिया. आई गो टू स्कूल, आपने ES नहीं लगाया. आई गो टू स्कूल. शी गोज टू स्कूल, योर मदर गोज टू स्कूल. मीन्स एनी सिंगल पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर कहीं आएगा तो हम SES का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज S oblique ES. अब यूज़ करना है या नहीं करना है, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. एंड देन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट उसके बाद उतना नेसेसरी नहीं भी होता,
आई टीच, ये भी पूरा सेंटेंस इंडेफिनिट, आई टीच इंग्लिश, ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ऑब्जेक्ट है या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं रहता है। वट इज इम्पॉर्टेंट इज दिस V1 ऑब्लिक SORES, SES लगाना है या नहीं लगाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर लगाना है, अगर हमें इसको यूज़ करना है तो किसके साथ, दिस इज चिल्ड्रन वी आई से थर्ड पर्सन सिंगुलर, this is third person singular, I mean to say he, she, it and any single name, कोई भी एक नाम, उसको बोलते थर्ड पर्सन सिंगुलर, he, she, it। now how many persons children we have? 3, you have 3 persons। first person INV, that is speaker, जो बोलता है उसको बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आई, हम बोल रहे हैं तो वी बन जाता है, INV, दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। यू इज सेकेंड पर्सन, यू इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, यू आर माई चाइल्ड, इट्स ओनली वन, यू आर माई चिल्ड्रन, दैट बिकम्स प्लूरल। सो यू इज सेकेंड पर्सन, दैट इज लिसनर, इज ऑल्सो सिंगुलर and it is also plural, second। then we talk about third person, he, she, it, his, him, her, they, their, them, all he, she, it, his, him, her, they, their, them, all the nouns, all the names, children, they just become third person। जितने भी नाम हैं, जितने भी हम नेम्स लेते हैं या जितनी भी है, ओके, उनको थर्ड पर्सन में लाएंगे। ओके, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 10 भी, 20 भी, 50 भी, वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक, ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, इट होना चाहिए, या कोई भी एक नाम होगा, और उसमें कलेक्टिव नाउन्स भी आ सकते हैं। योर फैमिली, चिल्ड्रन, योर फैमिली नोज मी, फैमिली एक है, बट इफ आई से योर फैमिली पीपल, पीपल प्लूरल हो जाएगा, फैमिली पर्सन्स नो मी, मैं उसमें नोज नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो प्लूरल हो जाता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन ओनली, एक ही व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज ही, शी, इट एंड जस्ट वन नेम। आई एम श्योर चिल्ड्रन यू आर ऑल गेटिंग, मुझे विश्वास है कि आपको सब ये समझ में आ रहा है। सो अगेन सी चिल्ड्रन, सब्जेक्ट दैट मीन्स डूअर, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में उसको कर्ता बोल देते हैं। V1, of course I have told you there are 3 forms of verbs, but I am going to talk about V1। अब क्वेश्चन है कि हम S या ES लगाएं या ना लगाएं। दिस इज चिल्ड्रन व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे, V1। और अगर ये S और ES लगेगा, इफ़ यू हैव टू पुट दिस S और ES, it's going to be he, she, it and just one name, that's what I mean। okay, now if you don't have to put children, अगर आपको ये नहीं लगाना supposing, तो what will happen, this is subject V1 plus object। now I have removed S or ES from here। what I have done, I have removed S or ES from here। this means I, we, you, they and plurals। I, we, you, they, plurals। this is children I, first person singular। this is we, first person plural। I, we don't have to put S or ES। I teaches you नहीं बोलता हूँ मैं, I teach you। she teaches you। I goes नहीं बोलता हूँ मैं, I go to school। she goes to school, he goes to school। your mother goes to school। okay, your mother is only one, but if I say your mother and father, they are plural, go to school। so I, V1, object, here children no S or ES, you can see I, we, you, they, plurals, no S or ES। okay, the third thing is children, if it is negative, now in case of negative, subject, do, does, not plus V1 plus object, you can see this here, do, do, and then it is does, DOES।
not V1 object. This is to be used, children, in negative. अगर आपको कोई बात नहीं में बोलनी है, आपको बात मना करनी है, प्रेजेंट टेंस में यस आई डू नॉट टीच यू, शी डज नॉट टीच यू, आई डोंट वांट टू गो विद यू, शी डजंट वांट टू गो विद यू. हाँ, पास्ट टेंस में जाएगा तो डिड हो जाएगा. वी विल टॉक अबाउट व्हेन आई कम टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट विल बी डिड. बट एज ऑफ नाउ, इफ यू वांट टू से in negative, it is do, does, plus not, plus V1 plus object. Of course, it is in negative when you want to say no. Okay. Now, the next thing comes is, it is interrogative. Do, does, subject, do, does, subject. Okay. When you talk about interrogative, children, do or does subject, then it is V1 and then object, and it is known as interrogative. बेस जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, इंट्रोगेटिव, डू यू लिव हियर, मा योर आंसर शुड बी येस आई डू, येस आई लिव, नो आई डोंट. वेल चिल्ड्रन, दोज ऑफ यू रियली वांट टू improve your English skills, those of you really want to improve your spoken part, this is how you should be framing sentences. Well, right or wrong doesn't matter in the beginning, just go to make a start. You go to make a start, and this is what I am emphasizing on. Not only I am bringing the present definite tense, but also you should see, keep using this in your day-to-day life. Keep asking, keep questioning, keep exchanging these things with your companions. That will enhance your speaking English. Start from today, children, itself. Do you know me? Do you know me? There is a question mark here. Well, you answer, Ma, yes, I know. No, I don't know. Yes, I know. No, I don't know. Yes, I do. No, I don't. This is how you can start with simple. Children, those of you are just listening first time, how to make a beginning in English, this is how you should start with. Fine. So question mark, do or does, subject, V1, object. This is interrogative. Question mark. It's not interrogative, children. Some of you do pronounce it wrong. It is interrogative. So, do or does, subject, V1, object, interrogative. This is interrogative. Fine. Double R. It is, yes, R-R-O-G-A-T-I-V. Interrogative. It is R-R. Interrogative. Okay. Now, if it is interrogative, negative, children. If it is interrogative, negative. Fine. Yes. Do, does, subject, not, plus V1 plus object plus question mark. This is known as interrogative negative. Do I not teach you? Do I not come here? Does she not teach here? Do, does plus not. That is interrogative. And the last, children, here, it is known as subject plus do, does, V1 plus object. This is emphatic sentence, children. Emphatic. Emphatic means where you lay more stress. She comes here every day. She does come here every day. I meet you every day. I do meet. Look at my expression. A more of breathing, little bit of more stress. Means in Hindi आप बोलते हो पक्का किया, जरूर किया. अब इंग्लिश में तो हम पक्का जरूर नहीं यूज़ कर सकते ना, नहीं कर सकते ना. तो उसके लिए क्या करेंगे? कोई काम आप एम्फेसाइज कर रहे हो, पक्का कह रहे हो. I do teach here. Look at my way. I do teach here. She does come here. More breathing, more breathing. Children, start speaking the way I do. ऐसे करोगे ना? Yes, I'm sure you will do it. So, emphasis, emphatic sentence इसको बोलते हैं. So, what I've done, children, I've just brought present indefinite tense to you. Check the spelling. Again, I am saying because many of you go wrong. Fine, it is indefinite. See how my pronunciation goes on. The way I pronounce, children, start doing the same.